This is class 11th accountancy, and as you all know that this is our commerce team of Jink Vidyalay. All the educators are the CBSE registered and most qualified and the eligible educators. If you join Jink Vidyalay with the commerce department, you will get the benefit of getting guidance from all these great educationists. Now, this is a short introduction about me, who is going to take accountancy and business studies for you all. After that, these are the social media handles where you can follow us, where you can join us. And for the queries, you can just mail me over kunalsinghal85@gmail.com. Yesterday, you all have sent the charts over the same IT. Fine. Now, the thing is what I need to guide to one of the student. Now, this chart, just concentrate over this chart as I explained yesterday. Here we can see total 6 steps are there: identification, recording, classification, summarizing, analysis and interpretation, and communication. These are total 6 steps. When we combine all these 6 steps, आप अपनी कॉपीज ओपन रख के बैठेंगे. अभी अपने सामने आपके ये चार्ट आपके कॉपी में बना हुआ है, वो क्लास वर्क कॉपी आपके सामने ओपन रहनी चाहिए, जिससे कि whatever things I'm guiding, and if you have made any sort of mistake, you can make a correction over there. Fine. So when we combine all these 6 steps, it becomes what it becomes. It becomes accounting. Fine. When we combine all the 6 steps, it becomes accounting. But when we take initial first 3 steps, it becomes bookkeeping. So one of the student has sent me the account chart of this accounting process also, and by mistake he has included summarizing also in bookkeeping. नहीं, bookkeeping में initial first 3 steps ही हैं सिर्फ. Clear? तो जिसने भी mistake की है उसको correction कर लीजिए. Bookkeeping includes identification, recording and classification only, and summarizing is not a part of bookkeeping. So just make a correction, all those who have made the mistake like that. This same chart was discussed yesterday. It was shared in the group also. So it was expected that these kind of mistakes should not be done. Fine. So that was a little bit guidance that was required from my side, all those who had made mistakes. Now let us move further. Ready? Now we will be mentioning the meaning of accounting, the objectives of accounting, the difference between accounting, bookkeeping, and accountancy, and all. We will be mentioning all those things. Fine. So let us start with that. You can put the heading, today's date, the heading, introduction to accounting, chapter number 1. I hope chart बनाने से पहले आप लोगों ने ये सब चीजें लिख ली होंगी already. So over your screen, you can see one definition. This definition is given by American Institute of Certified Public Accounting, and this definition was given in the year 1941. The definition is: accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Let me give you an explanation for this, and in the meantime you can note down this definition in your copies. मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं और आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपीज में. क्या लिखा है देखिए. अकाउंटिंग इज द आर्ट. दिस इज एन आर्ट. आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ recording, classifying, and summarizing. We took these steps in the process of accounting yesterday. We studied those. Fine. Now, what kind of what you are gonna record? The transactions and events. We will be recording, we will be classifying, we will be summarizing. What we will be recording, classifying, and summarizing? The transactions and events. What kind of transactions and events? Which are of a financial character. So what was the first step in the process of accounting? Identification. What we were identifying?
We were identifying the monetary transactions. We were identifying the financial transactions. We were identifying the economic transactions. So accounting is the art of recording, classifying, and summarizing transactions and events of financial character. And after that, what we did after summarizing, analysis and interpretation. So, and interpreting the results thereof. तो उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको पार्ट्स में जब मैंने इसको डिवाइड करके इसको बताया है तो समझ में आया होगा. Now, the language that you have to mention it in your copies. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money. Comma, transactions and events which are in part at least of a financial character, and interpreting, that is determining the nature, understanding, and taking decisions, that is meant by interpreting the results thereof. Put a full stop and put this whole definition within inverteds, because whenever a definition we talk about, definition is always given by certain author or certain institution or some organization. Meaning can be in our own language, but definition is always given by a certain authority. So you can just mention this definition have been given by American Institute of Certified Public Accountants. होगा ये, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन करके लिखेंगे. It is American Institute of Certified Public Accountants. As in India, we do have Indian Institute of Chartered Accountants. Okay, Institute of Chartered Accountants of India. We do have this institution in India. Similarly, America is having an American Institute of Certified Public Accountants, and this definition was given by them. Fine. Let us move further. Put the next heading, meaning of accounting. अभी जो हमने लिखा ये क्या था? This was the definition. Put the next second heading, meaning of accounting. And for that, you can note down, accounting may be defined as the process of, ये स्टार्टिंग में आप ये इन ब्रीफ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. Accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, and communicating the financial information to the users of accounting service for making rational decisions about the entity. आई होप इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, that what is the main objective of accounting. Last sentence, if you can just concentrate, what is the main objective of accounting? It is for the purpose of decision making. And who is going to take the decisions? Obviously the users of accounting information, that may include the owner, the managers,
the concerned tax authorities, the banks and financial institutions. So main purpose of accounting is making rational decisions about the entity. So this is a meaning. पहले हमने definition लिखा, which is given by a particular institution. ये meaning हो गया. Now put the next heading, objectives of accounting. Wait, put the next heading, that is bookkeeping. Before we take down the objectives of accounting, we have to define bookkeeping and accountancy also. Fine, accounting तो हमने already कल लिख लिया था, मीन्स समझ लिया था, और आज हमने लिख लिया. नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए बुक कीपिंग या फिर मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बिफोर दैट मैं कुछ चीजें आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते हैं. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है. सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स. Whatever transactions you want to record in the books of accounts are recorded in the money terms. Monetary value उनको दी जाती है. Like for in India, it is presented in terms of rupees. After that, we do have certain other characteristics. Functions of accounting. We studied the functions of accounting yesterday. Identification, recording, classification, summarizing, analysis and interpretation, and the communication. These all are the steps in the accounting process, as well as these all same are known as the functions of accounting. Clear? इसके बाद में आता है हमारे पास में अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के. मैं शॉर्ट में बस आपके माइंड में एक आइडिया देता जा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं. ज़्यादा इनको डीप में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के पर्पज से सफिशिएंट है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. वो तो अभी हमने लिखा दैट इट इज एन आर्ट. हर पर्सन अपने हिसाब से उसको रिकॉर्ड करता है. देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट? बिकॉज हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स को सीख रहे हैं. हम अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, और जो ये अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स हैं, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है पूरा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है. और साइंस में भी क्या होता है, साइंस का मतलब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नहीं है. साइंस का मतलब है डिसिप्लिन which has to be studied. Science means a subject that has to be studied, that is taught, and that can be understood with certain principles. जो कुछ principles को, concepts को, accounting standards को follow करके किया जाए, उन्हीं को हम कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं साइंस. तो अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, और ये सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. तो इन्हें फॉलो करके जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं रह जाता है, बल्कि अकाउंटिंग एक साइंस भी हो जाता है. फिर आता है प्रोवाइड्स सर्विस एक्टिविटी. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ सर्विस एक्टिविटी. हाउ इट प्रोवाइड्स अ सर्विस एक्टिविटी? Because we communicate the information to the users of accounting information, and after that what we do, after that communication, what we do after this, the जो the users take decisions regarding the institution, regarding the organization, regarding the business. So these were the characteristics of accounting. Regarding the process of accounting, we already had studied in detail. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यू कैन ऑल्सो मस्ट बी नोन अबाउट दैट. अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना. एक और ब्रांच होती है जिसका नाम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है प्रोडक्शन एंटिटीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना. एक और ब्रांच होती है जिसका नाम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि डिसीजंस लेना, अपने बिजनेस के मैनेजमेंट के एफिशिएंसी लेवल को इंप्रूव करने के लिए डिसीजंस लेना, बजट्स वगैरह प्रिपेयर करना. आफ्टर दैट टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दीज आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग.
but and human resource accounting is also there, but our main focus will be over the financial accounting because that is our part of syllabus. हमारे syllabus में financial accounting ही है class 11th as well as in class 12, इससे ज़्यादा हमारे syllabus में नहीं है. Now you can see the heading that is bookkeeping, accounting and accountancy. तो आपने जो heading लिख रखा है अपनी कॉपी में meaning of bookkeeping, उसमें लिखना शुरू करेंगे. Bookkeeping means recording and classifying. Bookkeeping means recording and classifying the business transactions in a set of books. Put a full stop and further continue. Bookkeeping is a part of accounting process as it involves the initial stages of accounting. As it involves initial stages of accounting. अब अकाउंटिंग क्या होता है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे. अकाउंटेंसी. नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए अकाउंटेंसी. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अकाउंटेंसी होता क्या है. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना होता है. अच्छा, पर्पस क्या होता है ये रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का? द ओनली पर्पस इज सो दैट द अकाउंट्स बिकम कंपेरेबल. मैंने जो अकाउंट्स बनाए, अगर मैं अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाता हूं और आप जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाते हैं, सो आपके अकाउंट्स और मेरे अकाउंट्स आपस में कंपेरेबल नहीं रह पाएंगे. But if you and me both follow the same principles, concepts, and conventions, both follow the same accounting standards for the preparation of accounts, then these accounts will become comparable with each other. और आजकल तो मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में अगर अलग अलग पॉलिसीज फॉलो होंगी तो कैसे हम मल्टीनेशनल बिजनेस रन कर पाएंगे, अलग अलग कंट्रीज में हम कैसे अकाउंट्स को कंपेयर कर पाएंगे. सो इट इज पॉसिबल ओनली वेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन्हें जब हम पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं अकाउंटेंसी. सो इन शॉर्ट, in the nutshell we can say accountancy is the theoretical part of accounting. accounting क्या है? accounting एक process है जो कि completely numerical nature का है, but उस accounting को करने के लिए जो theory पढ़ाई जाती है वो accountancy में पढ़ाई जाती है. ठीक है. और बुक कीपिंग क्या था? बुक कीपिंग वॉज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. लिखना शुरू करेंगे अकाउंटेंसी के हेडिंग डाल के लिखना शुरू करेंगे. अकाउंटेंसी रिफर्स टू systematic knowledge of the principles and the technique applied in accounting. Put a full stop and further continue. It emphasizes us as to how to maintain the books of accounts how to summarize them and how to analyze and communicate them.
how to analyze and communicate them. That's it. So this is the meaning and definition of accountancy. Put the next heading, accounts. ACCOUNTS, accounts. क्योंकि हमने अकाउंटिंग समझ लिया, बुक कीपिंग समझ लिया, अकाउंटेंसी भी समझ लिया. अकाउंटिंग में हमने देखा जो जो स्टेप्स थे ना, उन स्टेप्स को परफॉर्म कैसे करना है वो अकाउंटेंसी हमें पढ़ाएगा, और हमारे सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंटेंसी ही है. ठीक है, लेकिन ये अकाउंट्स ये भी दिखने में सुनने में सेम ऐसे एक जैसे ही दिखता है, और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इस सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंट्स ही बता दिया. अकाउंट्स का पीरियड, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग अकाउंट्स. लिखना शुरू करेंगे. अकाउंट्स इज अ प्लेस और अ स्टेटमेंट, नॉट अ प्लेस. मेंशन इट. अकाउंट इज अ स्टेटमेंट where the transactions of similar nature are grouped together. Account is a statement where the transactions of similar nature are grouped together. Put a full stop and further continue. Account is prepared at the classification function of accounting. Classification function of accounting. Put a comma and further continue. And is also known as ledger accounts. Spelling is there on the screen. Account is also known as ledger account. Okay, full stop. Unfortunately, I just planned for objectives of counting also, but time is running out still. Any questions, any queries, any difficulties, any doubts to anyone regarding any part that we had studied till here? किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में लिखें, मैसेज में लिखें. चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. Objectives of accounting, and we do have certain 5 to 6 objectives, so note down the first one. Keeps systematic record of business transactions. Start writing, put a dash and continue writing. The main objective of accounting is to keep a complete and systematic record of financial transactions
of the enterprise put a full stop and further continue. These records are maintained in a chronological order you can note down the definition. Chronological orders, CHRONOLOGICAL, which means date wise. The transaction which has occurred first will be recorded first, and the transaction which has occurred at later stage will be recorded later. Fine. So in a chronological order, for the chronological order, so that can be used in future. So that can be used in future. Put the next heading. कैलकुलेशन मत लिखिए, इसको लिखिए आप ascertaining. सेकेंड आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ascertaining of profit and loss of the business. The second heading will be ascertaining of profit or loss of the business. Start writing. Accounting helps in ascertaining the profit earned or loss suffered in the business during an accounting period. Put a full stop and further continue. For this purpose, a statement known as trading and profit and loss account. For this purpose, a statement known as trading and profit and loss account is prepared. So further few points are there that we will continue in our next class. That was all from my side for